हेलो कैडेट्स। जय हिंद सबको। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे ये आप लोगों को जो फॉर्म फिलअप करना है। स्पेशली द वीडियो इज मेड फॉर यू टू हेल्प यू हाउ टू fill up the form. Correct? So here is the form with me. This is the enrollment form, right? And here I'm going to help you how to do that. So the entire conversation will be in Hindi or English. As you can see the form, the first one I will advise you all to fill up the entire form using blue ballpoint pen. Remember blue ballpoint pen, as it is already there in the the form is printed in black ink. So coming to the filling of the form first, before filling of the form, it is given attested PP size color photograph to be pasted over here. Remember, you need to paste, don't staple it. Paste a passport size photo of yours in school uniform and in white background preferably. Coming to the filling of the form, the first one is name and it is clearly mentioned to use block letters. So suppose someone's name is Ramcharan. So how to fill up? Like use small capital letters only you are going to write, but the font size should be reduced to get it accommodated in the box. Ram, then one box you are keeping as a empty box, right? Ram, then Charan, correct? Ramcharan Chaudhary. C again starts over here. Choudhury. Accordingly, it will be done. Correct? Next, coming to the nationality and date of birth. So here the nationality to be filled up as Indian, and then the date of birth is written DD, MM, and four Y's are there. It means YYYY. But no sufficient boxes are over here to write in YYYY. So that is what you need to do is you need to make two more boxes over here. Okay, you need to just create two more boxes over here like this and write down. Suppose your date of birth is 16 March 2012. So 16 March 03 and 2012 2012. Correct? Coming to the father's name. Cadets, remember all the names will be following the same way without salutation. Like someone's father is doctor, do not write it Dr. Sashank, Dr. Sushant Chaudhary. Do not write that. Write only Sushanta Susanta Chaudhary, Choudh, जो भी स्पेलिंग होगा आपका कर लेना फिर करेक्ट. नेक्स्ट मदर्स नेम द सेम वे नो मिसेस नो like SMT or Srimati, no salutation or to be given over here. Only like suppose someone's mother's name is Garima. So Garima, then Chaudhary. Always remember to represent a space in between the names, you keep a box vacant. Next, coming to the permanent address, the same way, permanent address to be filled up this way. Like, suppose my address is there, whatever the address to be. Okay, always remember there should be a box, uh, an empty box representing a space in between two words. And you can use a comma like this also in a box, correct? Next, coming to mobile number. So you can give your mobile number over here also, as I'm giving this way. Like 986142, जो भी नंबर है 10 digit number you can give it. Coming to the email ID, your email ID must be containing over here. If it doesn't get accommodated over here, अगर जगह नहीं हो रहा है तो और दो चार बॉक्स आप खुद कर लेना फिर. करेक्ट. ब्लड ग्रुप का जो है, as you know, blood group A, suppose someone says A positive, so write only A plus.
If someone is like B negative or AB positive, the same way AB plus. Do not write any plus VE or plus minus VE. Then coming to the ninth point, it is the gender only. So if it is male, write MALE, otherwise write female, correct? Female. Next, nearest railway station. So whatever your suppose your nearest railway station is Cuttack. So write CUTTACK, Cuttack. Then I think it is Cuttack Junction. So write CT Cuttack Junction or accordingly. Coming to the nearest police station. So the same way, whatever the police station you are going to write. But remember always keep a one box space in between two words. This is very important, that is educational qualification and mark in percentage. Cadets, if you are getting enrolled in standard 8, मतलब कि आप अभी जो हो स्टैंडर्ड 8 में हो, तो आपका क्वालिफिकेशन हो गया स्टैंडर्ड 7। मतलब आप क्या लिखोगे, लिखोगे VII करके एंड हाइफन दे के स्टैंडर्ड 7 की एनुअल एग्जामिनेशन में जो ओवरऑल परसेंटेज का मार्क्स था आपको लिखना है इधर। सपोज समवन हैज स्कोर्ड 95.8, सो आपको लिखना है 95.8 परसेंटेज, करेक्ट। इफ समवन इज गेटिंग एनरोल्ड इन स्टैंडर्ड 9, मतलब आप लोग का क्वालिफिकेशन अभी स्टैंडर्ड 8 है, तो आप लोग लिख सकते हो इधर VII हाइफन देन जो भी परसेंटेज है आपका along with the percentage symbol you can write. Coming to the identification marks. Cadets, remember here it is compulsorily mentioning at least two. So identification marks क्या हो सकते हैं? आइडेंटिफिकेशन मार्क्स मतलब आपका कहीं कट मार्क हो, बर्न मार्क हो, बर्थ मार्क हो, कहीं पे सिवियर इंजुरी हो गया वो वाला मार्क हो, या फिर कहीं पे लाइक अ ब्लैक मोल नॉर्मली, like kind of things. Okay, so you can write wherever the condition is, like one करके ले सकते हो इधर, a black mole in on right cheek, a black mole on nose. So where it is like visible, there only you must write this. Correct? These are the identification marks. Next we have the other very important points also. 14 number is asking, have you ever been convinced by a criminal court? अगर हो तो फिर डिटेल्स में लिखना, नहीं तो फिर NO करके नो लिख लेना। नेक्स्ट कमिंग टू नेम ऑफ स्कूल और कॉलेज, सिंस यू आर इन JD junior division, you are going to click on school and you write the school's name. Suppose someone's school's name is Stewart School, right? STE, then WART, then space SCHOOL, then comma, then CUTTSCK. Correct, children? Next, coming to 16, willing to be enrolled. Yes. Fill it up over here. Yes. NCC unit to be enrolled as yours is one Odisha. So accordingly you write one within bracket O, then MED, one Odisha med, COI, NCC, CTC. Clear? Next, have you been enrolled in NCC earlier? No. Have you been dismissed from NCC? No. Next of kin matlab you can give like your parents number also, again like your fathers, mothers, you can give your brother's number also, uncle's number also, who is your guardian. Okay, so here preferably you give your father's name, like suppose your father's name is like what is the name I had put there, whatever the name was there, suppose Sham Chaudhary, so CHYAM space CHOUDHARY, then it's written with relationship, so within bracket write down FATHER, no sufficient boxes are there, that's what I just I'm writing, ये थोड़ा मैं बाहर लिख रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद टेलीफोन नंबर एज एप्लीकेबल, विथ एड्रेस ऑल्सो लिखा है, तो आपको एड्रेस भी लिखना है, जैसे कि
Suppose someone's address is Buxi Bazaar. So write BUXI, then space, then Bazaar, then CTC, comma CTC. Correct? Along with that, it is written telephone number. So you can mention the telephone number over here. Again 986 जो भी है करके लिख लेना. These two are very important. Bankers details and IFSC code. IFSC code is a the it's a bank's individual code. So you can search over in the internet if in the passbook it is not mentioned. Like suppose SBI का start होता है SBIN 00 और 000424 ऐसे करके कुछ होता है करेक्ट. नेक्स्ट बैंक अकाउंट नंबर का जो होता है चिल्ड्रन सपोज 00 से कई सारे बैंक्स जो है अकाउंट नंबर देते हैं अपना सेविंग्स बैंक अकाउंट 00 से. सो यू कैन राइट 00243 जो भी है करके ईच बॉक्स विल बी filled up accordingly. Correct? Next, signature of the applicant. Always remember, children और cadets, आप लोगों का जो साइन करना है ऐसे करके कोई ऐसे मतलब कि ऑटोग्राफ नहीं देना. ठीक है करेक्ट. आप लोगों को क्या करना है फुल सिग्नेचर करना. जैसे कि सपोज एनीवन्स नेम इज रामचरण चौधरी तो राम then Charan in running handwriting. Remember in running handwriting again no need to fill it up using your capital letter or block letters. Next is the date. For this year 2026 children, you need to put 16 April 2026 as your enrollment had happened on this date. Always remember this date wherever in the form the date sign the date like space will be there to put. You need to put your enrollment the date on the on which your enrollment had taken place, right? So for this year 2026 this date is 16 April 2026, correct? For the next year 2027 accordingly like for other years accordingly whatever the date the ANO will be telling you you need to put it. So next coming to the next page children, always remember this is the first page to be printed in the front side of a paper and ये जो है next page जो है ये वाला है second page will be printed just behind the first page of the like enrollment form. मतलब ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये जो प्रिंट करोगे आप लोग दोनों साइड में प्रिंट कर लोगे करेक्ट. नाउ कमिंग टू द कंसेंट फॉर्म ये इस बार जो है नया इंट्रोड्यूस किया गया है. आई करके आपका नाम लिखना जैसे कि आपका नाम सपोज था रामचरण चौधरी तो फुल फुल पूरा लिखना रामचरण चौधरी करके और एक बार भी इधर लिखना रामचरण चौधरी एंड इधर सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट तो सिग्नेचर आपको जो जैसा है मतलब कि छोटा बड़ा जो भी लेटर आपको यूज करना है कर सकते हो बट इट शुड बी रनिंग हैंडराइटिंग करेक्ट. एंड इधर जो प्लेस है आपको लिखना आपका प्लेस का नाम जैसे कि मैं लिख रहा हूँ कटक एंड डेट मेंशन करना तो डेट एज आई टोल्ड यू द सेम डेट टू बी फॉलोड एवरीवेयर 16/4/2026 correct. After this part the very important part is that to meet the doctor to visit to a doctor regarding your certificate. So you go to a nearby doctor. It is MO means medical officer, correct? And the doctor will write, otherwise you write the name of your. I have examined Ram Charan Chaudhary, Ram Charan Chaudhary, and consider him or her tick mark fit or unfit. Tick mark on fit for enrollment as a cadet in NCC. Signature, whose signature? Doctor's signature. Okay, this is the doctor's. Remember, this is the doctor's signature and designation like assistant professor or professor or something. Then medical officer जो है ये सील लगाना है इसके डॉक्टर का सील इधर लगना है ठीक है. एंड प्लेस जो है जो भी प्लेस है कटक एंड ऑल जो भी भुवनेश्वर जिधर भी कर रहे हो आप लोग एंड डेट जो है बेटा preferably if the doctor like if he or she agrees to give you the date of the 14 which date I told you 16
4/2026 करेक्ट। अगर नहीं हो रहा है तो फिर आप देख लेना फिर आप, अगर नहीं हो रहा है तो वट एवर द डेट is putting the same date you are going to put correct. Next is declaration by parent or guardian. I solemnly declare. So इधर जो रहेगा कैडेट्स ये आपकी फादर और मदर, ऑलवेज रिमेंबर अगर आपकी जो फादर है वो कर रहे हैं सिग्नेचर तो थ्रू आउट ऑल द फॉर्म्स योर फादर विल बी डूइंग, अदरवाइज योर मदर। जो एक ही पेरेंट, ऐसा नहीं है कि इस फॉर्म में फादर करेंगे दूसरी फॉर्म में मदर करेंगे, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। So I dash promise that after enrollment of my son और daughter, जो भी पुट टिक मार्क मारना है, फिर जेडी के लिए सन, जेडब्ल्यू के लिए डॉटर, ये आपका फादर का नाम रहेगा। जैसे कि श्याम सुंदर चौधरी, सपोज श्याम सुंदर, आई श्याम सुंदर चौधरी करके, एंड फादर से सिग्नेचर क्लियरली इट इज मेंशन, प्लेस डेट वही डालना है जैसे करके मैं बोला था फिर, करेक्ट। नेक्स्ट कमिंग टू द सर्टिफिकेट. Also, you need to fill up this form over here, but leave the space for the necessary signature of the A1 principal. ये करके लिखना है कि मिस्टर और मिस जो भी है आपका नाम, देन आपका नाम लिखना है इधर, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था रामचरण, तो मिस्टर रामचरण चौधरी सन और डॉटर, अब ऐसे टिक करके रख देना। फिर श्री, आपका फादर का नाम लिखना, जैसे कि फादर का नाम इधर मैंने लिया था श्याम सुंदर, ठीक है, श्याम सुंदर चौधरी। अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, जो भी है क्लास आपका करंट क्लास, जैसे कि आप 9 में हो तो 9 लिखना, 8 में हो तो 8E, जो भी सेक्शन के साथ लिख लेना। फिर सपोज समवन इज 9A, सो राइट क्लास ऑफ 9A, ऑफ नेम ऑफ स्कूल, ओके, ऑफ नेम ऑफ स्कूल मतलब इधर आपका स्कूल का नाम लिखना है इधर, रिमेंबर, ओके, ऑफ स्टुअर्ट स्कूल कटक, करेक्ट। नो स्पेस इज देयर बट यू नीड टू राइट, एंड प्लेस डेट ऐसे करके आपको लिखना है, वही है जो डेट प्लेस बताया था वही डेट प्लेस डालना है, डेट, एंड दिस स्पेस टू बी लेफ्ट फॉर द ए नो टू साइन, दिस प्लेस is to be left for the principal to sign. Coming to the next page, actually remember children, this second page is very important because this page will be scanned and like in the online form में ये काम में आएगा हमें, तो ये पूरा सेकेंड पेज का चाहिए, करेक्ट, जो स्कैंड कॉपी। नेक्स्ट ये आ गया इंडेमनिटी बॉन्ड, दिस इज द थर्ड पेज ऑफ द फॉर्म। इंडेमनिटी बॉन्ड में क्या करना है, वेरी इंपॉर्टेंटली इधर नेम में लिख देना है जो प्रिंसिपल का नाम, ठीक है, लाइक आई एम राइटिंग द नेम इज डी मार्टिना, so no salutation is required here children, do not give. Next, address principal, remember this children, principal comma Stuart school Katak, correct, Stuart school Katak. Next, the second witness will be your A no, so write down again Soumya Ranjan Panda, Soumya Ranjan Panda, and the address is ANO, comma Stewart School, Cuttack. And necessary signature will be done by the ANO and by the principal, correct? Again, the date place also you need to choose. The date is the same date I told you, 16/4/2026, and the place is Cuttack, correct? नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज अ सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट इन रनिंग हैंडराइटिंग, जैसे कि आपका नाम था रामचरण, सो रामचरण चौधरी करके लिख लेना, एंड नंबर इज टू बी लेफ्ट ब्लैंक, दिस blank space will be filled up by me after getting the regimental number in online after the online registration is completed. नेक्स्ट नेम आपको इधर कैपिटल में लिखना है फिर और एक बार, राम चरण जो भी है करके चौधरी या करके लिख लेना। Next, here this is very important to put the signature of your like yeah, of your parents. Oh, by mistake it was made the sign. So here signature of your parents or guardian, like the
फादर्स नेम वाज श्याम सुंदर, सो ऐसे करके ये रनिंग हैंडेड में साइन करना है उधर, श्याम सुंदर चौधरी। नेम इन कैपिटल लेटर अगेन, श्याम सुंदर चौधरी। देन एड्रेस जो भी है एड्रेस आपका डाल देना, फिर खत्म। तो ये कंप्लीट सेट हो गया, जो कि है अपना ये एनरोलमेंट फॉर्म, करेक्ट। नेक्स्ट कमिंग टू द CWS फॉर्म। CWS मीन्स द कैडेट वेलफेयर सोसाइटी। द सेम वे आपको क्या करना है, दोनों साइड में प्रिंट करना है, ठीक है। तो दोनों साइड का प्रिंट करने के बाद दिस इज द फर्स्ट पेज टू फिल अप। सो ये फर्स्ट पेज में बेसिकली क्या होता है चिल्ड्रन, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइक what are the informations required over here। I cadet clearly mention name in block letters, तो आपका नाम कैपिटल लेटर में लिखना है, राम स्पेस चरण, जो भी जैसे करके, ठीक है। देन सन और डॉटर ऑफ, ये ब्लॉक लेटर, फादर्स का नाम लिख लेना है, स्टूडेंट ऑफ क्लास 8 और 9 ई ए जो भी सेक्शन लिख लेना है, नेम ऑफ कॉलेज जो लिखना है आपका स्टार्ट स्कूल लिख देना, ऑन माई एनरोलमेंट विद एनसीसी डेट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू पुट 16/4/2026, करेक्ट। नेक्स्ट, माई फादर और मदर ऑक्यूपेशन, जिसका भी जिनका भी है फादर या मदर का, सपोज यू आर विलिंग टू गिव फादर्स ऑक्यूपेशन, सो राइट ऑन फादर्स ऑक्यूपेशन, सपोज एनी anyone's government job or businessman or whatever, like you can write, and it is written for occupation, so write business only, okay, not businessman, so write business, right? If anyone is a job holder, so write which job and all, ठीक है। एन एनुअल इनकम सपोज 10 लाख का है, तो राइट 10 lakhs, करेक्ट, पर annum। सो ये हो गया आपका फर्स्ट पेज, प्रोबेबली खत्म हो चुका है, एंड ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। देखते हैं फिर आगे बढ़ के क्या है, नहीं कुछ है नहीं। कमिंग टू द सेकेंड पेज ऑफ द CWS फॉर्म, आपको दिखाई दे रहा होगा नेम ऑफ द नोमिनी करके, ये दिखाई दे रहा है, तो इधर यू फादर्स का नाम डाल देना इधर, या फिर मदर्स का नाम, ठीक है। इधर फादर्स नेम, देन एज जो है, जिनका फादर का जितना एज है 43 ईयर सपोज, रिलेशनशिप अगर फादर है तो फादर लिखना, परमानेंट एड्रेस इधर लिखना, एंड परसेंटेज ऑफ फिनेंशियल असिस्टेंस पेएबल। तो आपको इधर फादर को पूरा 100% देना, या फिर मदर को पूरा 100% देना, या फिर फादर को 50 मदर को 50, तो जैसे भी करके आप लोग कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियर। तो मैक्स मिनिमम वन नेम कैन बी गिवन हियर, मैक्सिमम टू नेम्स कैन बी गिवन ओवर देयर, राइट। देन टू बी फिल्ड बाय द कैडेट इन ओन हैंडराइटिंग, तो मतलब ये जो लिखा हुआ है, ये जो स्पेस दिया गया है इधर, पूरा स्पेस में आपको लिखना है पूरा, अंडरस्टूड, इन ओन हैंडराइटिंग, जो कि लेजिबल होना चाहिए। जैसे कि माई मेंबरशिप में लिख रहा हूँ ऐसे करके, इन द वेलफेयर, तो मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचना चाह रहा हूँ वीडियो को, सो इसीलिए मैं जल्दी खत्म करना चाह रहा हूँ, इसीलिए मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ आपको। चिल्ड्रन, डेट एंड प्लेस रिमेन्स द सेम ऑलवेज, फुल सिग्नेचर ऑलवेज रिमेंबर इट्स गिवन फुल सिग्नेचर, मतलब आपको यहाँ पे ऑटोग्राफ नहीं देना है, यू नीड टू राइट योर नेम इन रनिंग हैंड राइटिंग, करेक्ट। Next, coming to the next phase, section 2. So it will be like again the place and date. Place is Cuttack and date is the same date, 16/4/2026, and signature of ANO or headmaster, head of the institution, that will be taken care of by the ANO. Okay, the ANO will do the needful for this. No need to do. Next, your parents like declaration is over here. I am willing to allow my son or daughter, जो भी है वार्ड नेम का, मतलब कि आपका नाम है, आपका नाम क्या था, जैसे कि आपका नाम था राम चरण चौधरी, जो जो भी करके। देन फुल सिग्नेचर ऑफ द फादर, ऐसे टिक लगाना, एंड फादर का सिग्नेचर, जैसे कि फादर का नाम था श्याम सुंदर, फुल सिग्नेचर करेंगे विथ कंप्लीट एड्रेस, तो आपका एड्रेस भी पूरा कंप्लीटली देना पड़ेगा इधर, करेक्ट चिल्ड्रन। नेक्स्ट, डेट एंड प्लेस, डेट वही है फिर 16/4, एंड प्लेस कटक। तो ये लगभग खत्म हो गया आपका सेकेंड पेज ऑफ दिस CWS फॉर्म। Coming to the third page, again the witness column is coming. Witness, always remember the first witness the principal, second witness the ANO, correct. So here nothing to write, full name and address or office seal of the witness, that will be taken care of by the ANO, okay. No need to do anything in this.
करेक्ट चिल्ड्रन, गोइंग वेल। नेक्स्ट सेक्शन 4 जो है एंड सेक्शन 5 है उसको छोड़ देना क्योंकि दिस विल बी फिल्ड अप लेटर ऑन, लाइक ये जो नॉमिनेशन फॉर्म विल बी प्रिंटेड ऑन बोथ द साइड्स ऑफ अ सिंगल लीफ। हाँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आई वाज एक्सप्लेनिंग इन द बिगिनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज व्हाट, जो भी जितने सारे फॉर्म मैंने दिया, इट शुड बी प्रिंटेड ऑन बोथ द साइड्स ऑन अ सिंगल लीफ। मतलब कि एक पेज है तो ये फ्रंट में भी प्रिंट हुआ, बैक में भी प्रिंट होगा। ऐसे नहीं कि आप 3 पेज करके स्टेपल करके दे दो। करेक्ट, फाइन। तो ये सेक्शन 4 एंड सेक्शन 5 उसको छोड़ देना, 4 एंड 5 उसको छोड़ देना, उसको कुछ फिलअप ही नहीं करना फिर। नेक्स्ट कमिंग टू द डिजिटल कंसेंट, ये फॉर्म, एंड हियर चिल्ड्रन रिमेंबर द डिजिटल कंटेंट मतलब आप लोग अपना आधार एंड ऑल जो ऑनलाइन फॉर्म फिलअप में ये इसको देना पड़ेगा। सो दैट इज व्हाट यू आर गिविंग द कंसेंट। ये कुछ नहीं करना। एक ये पेज 2 इज द फर्स्ट पेज, उसके पीछे पेज 3 प्रिंट कर देना जो कि ये दिखा रहा हूँ। उसके बाद क्या होगा, पेज 4 और एक मतलब कि अलग सा शीट में रहेगा फिर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना, आपको खाली इधर टिक लगा देना है कि आई एग्री एंड कंसेंट। देन एप्लीकेंट नेम क्या था, जैसे कि एप्लीकेंट का नाम था रामचरण चौधरी करके लिख लेना। देन पेरेंट और गार्डियन नेम जो भी है श्याम सुंदर चौधरी। देन डेट एंड टाइम ऑफ सबमिशन जो भी करके आप इसको ना, आप डेट एंड टाइम सबमिशन आप इसको वही 16/4 ही लगा देना और कुछ दिक्कत नहीं, बस इतना ही करना है आपको। तो आई होप cadets it will be a great help for you because many students are not filling up the details properly. सो ये मैंने क्लियरली आपको बता दिया। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, आधा घंटा आसपास हो गया। सो आपको ये वीडियो कंप्लीटली देखना है। कीप पेशेंस and see the video, watch the video properly, then you fill up the form. I won't like entertain any of the scribbled or any of the unclean, folded forms to accept. So with this, I am ending the video. Thank you.